हेलो गाइस व्हाट्सअप राधे राधे टू ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आप सभी का तुम्हारे कृष्ण भाई के एक ब्रांड न्यू लाइव स्ट्रीम में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं यहाँ पर जेंशिन इम्पैक्ट। सो लेट्स गो, रेडी हो जाओ यहाँ पर जेंशिन इम्पैक्ट के नेक्स्ट लेवल स्टोरीज को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होने वाला अब नेक्स्ट लेवल नेटलैंड क्वेस्ट। सो लेट्स गो, नेटलैंड की जर्नी हमारी बहुत आगे बढ़ती जा रही है। सो लेट्स गो, आज नेटलैंड का क्वेस्ट करने जा रहे हैं हम। बाय द वे, सो लाइक का बटन दबा दो फटाक से जेंशिन व्यूअर्स, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर तुम लोग इस चैनल पर न्यू आए हो तो। और हम आज की स्ट्रीम की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। बाय द वे, मैं एक चीज यहाँ पर लेना चाहता हूँ। लेट मी जस्ट गो टू, यहाँ पर सबसे पहले एक इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सो लेट्स गो, यहाँ पर हम आ चुके हैं और इसमें देख लेता हूँ मैं। बाय द वे, इसमें मेरे पास देने के लिए कितने हैं? मैं एक चीज इसमें देखना भूल गया था, यहाँ पर ये मैं दे सकता हूँ। लेट्स गो, 3 और अगर मैं करूँ तो इसमें मुझे और चीजें मिल जाएंगी। ठीक रहेगा, ठीक है। हेलो Anu, welcome to my live stream. Anu first in the chat, boys and girls. Hello, Matar bhai, what's up? Welcome back to my live stream. क्या हाल चाल? So let's go. यहाँ पर 60 प्राइमोस और 10 सिजल्स और मिल जाएंगे और साथ में हमें मिलेगा ये। ठीक है, तो सही है। अगर हम ये ग्राइंड करते रहे तो मस्त रहता है सीन। सो आ जाइए, बाकी हम चलते हैं यहाँ पर फटाक से। यहाँ पर सुमेरु में चलते हैं एंड लेट्स गो। सुमेरु नहीं, मुझे नेटलैंड जाना। नेटलैंड में चल के अपना आर्कन क्वेस्ट को कंटिन्यू करना शुरू स्टार्ट करते हैं। So let's go. Here we go. We are in the Natland, boys and girls. एंड नेटलैंड में आकर अब मैं यहाँ पर अपना आर्कॉन क्वेस्ट करना चाहूंगा। आर्कॉन क्वेस्ट हम करेंगे यहाँ पे। ये जो है ये हमारा ओके, लुक फॉर मोविका। ठीक है, सो आई गेस हमें यही करना है, लुक फॉर मोविका। यही वाला करना है आई गेस हमें। एंड ये कौन सा वाला है? आई गेस यही करना है हमें, लुक फॉर मोविका। सो आज ये वाला करते हैं। एंड इसमें वो क्यों ऑन है, आई डोंट नो। ठीक है, ओके, आपको भी मॉडरेटर बना देंगे भाई। ठीक है, हम्म, ओके ओके, ठीक है। मैं देखूंगा भाई, उसे ग्लिच को रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे और मैं करूंगा फिर। लेट्स गो, बाकी हम यहाँ पर जल्दी से मैं अपना ये स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। आ जाइए, लेट्स गो। 70% आई बोलता मारी क्या। सो लेट्स गो, अभी हमें जाना है यहाँ से आगे। तो चलिए यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं जल्दी से। सो ये रही हमारी मोविका, और मोविका से यहाँ पर बात करनी है हमें। Huh. लेट्स गो। There's a lot less stuff here than before. It's good to see you all here in one piece. मटर और मटर। ओके, अभी के लिए तो मैं एक को ही बना सकूंगा भाई। अगर बनाना भी होगा तो मैं एक को ही बनाऊंगा। I know you must have. जस्ट Thank जैसे ही वो goodness you made ग्लिच it back. रिजॉल्व होता है तो I came मैं एक here as काम soon as the करूंगा, Pyro एक को Archon told बनाऊंगा me आप में about से your एक को। plan. Take a seat, everybody. क्योंकि अभी के लिए जितने सब्सक्राइबर्स हैं आई गेस उतने काफी रहेंगे मॉडरेटर्स। लाइक प्रो ब्रदर, All right. 5 That मॉडरेटर। should do it for now. But just to be safe, I'll perform another checkup in a... I have to say, though... He always has been special like that. Given the current situation, that'd be. Of course. I still have patients to see, so I'll head out. Thank you, Koichi. All right. We might not see eye to eye, but we both had good intentions. Just give it time. I'm sure we'll figure things out between us one... Yeah. All right. There's so much to discuss, I don't even know where to begin. You've seen it for yourselves now. The devastation in the Night Kingdom. ओके ठीक है। I'll get straight to the point. Natlan is on the verge of destruction. It's very possible our nation has less than a year before total devastation. Huh? No. That can't be true, can it? less than That's a right. year.
But I've only ever disclosed that fact to the handful of people working with me to save this nation. यार मेरा ये Our नेटलैंड looming की क्वेस्ट destruction करके is ना not सही a में मूवी recent का निकालने का मन development, कर जाता सही में. but the inevitable conclusion of the disaster the Abyss initiated 500 years ago. Mulan told us a little bit about that. 500 years ago, all the nations of Teyvat were invaded by the Abyss. आपने शायद से Unlike the सीरियसली other देखा नहीं है. nations, बाय द वे लाइक का बटन दबा Natlan दो never गाइस had फटाक से stable स्ट्रीम and को. deep-rooted ley lines, so we Don't forget suffered to the like, share worst and of the subscribe my invasion. channel. The battle against the Abyss was exceedingly long and brutal. Even then, it took centuries of solving the disasters caused by the Abyss to finally achieve the peace we know today. And still, this is but a superficial victory. The forces of the Abyss have merely been driven back. I'd never have guessed. The problems plaguing the Night Kingdom are all the more complicated because that realm is essentially functioning as Natlan's ley lines. Okay. Immediately after the war, our calculations estimated that we would have a maximum of 500 years before the Night Kingdom was completely lost to the Abyss. Okay. But at that time, we were a nation of the destitute. Our people no longer... Our civilization was dying, our faith crumbling, and the line of power passed down from the Wayab nearly severed. If we didn't bring the nation back together, it would be foolish to even dream of defeating the Abyss in the future. So, the Archon had a long and involved discussion with the heroes of each tribe, and finally came up with a 500-year-long plan to save Natlan. So that's what happened. After finding Kachina, I encountered a strange figure who gave me a series of new memories. Since the plan was mentioned in those memories, I guess I've been chosen to play an important role in it. But there's still something I don't understand. Huh? But that doesn't make any sense! The Pyro Archon is supposed to be human. And by the way, मटर भाई आप एक चीज ट्राई कर देना. That's मैं right. आपको एक चीज बोलूंगा The कि मेरी hardest एक thing for काम करना humans आप to overcome has जो always लेटेस्ट been गॉड ऑफ वॉर time, वाली वीडियो है or ना rather, उसमें the एक कमेंट natural कर देना. limitations of our जिस lifespan. आईडी को मुझे वो A बनाना god can extend a वो human's मेरे life सामने by हो. using a certain जिस आईडी को amount of मुझे divine मॉडरेटर बनाना है. power, or subjecting them to a curse. But, as we all know, Natlan doesn't have gods like that. We can only rely on our own methods. A human life is like only by dying before my time could I have the chance to wake up again. So, in other words, this is your second... Yes. We only managed to defeat the Abyss all those years ago because the tribes came together as one. If the Natlan of the future was to have... The goal was to reunite the people and restore the strength of each tribe's Wayab. Once a tribe was back to its full strength, the tribe's Wayab would select a hero, indicating the tribe was once again ready for war. The Chosen would then stand by... So that means I'm one of the That's right. You bear the ancient name Umoja, the same one held by the hero from your tribe 500 years ago. तभी इसको ये हो It रहा है. means unity. After your adventure in the Night Kingdom, I trust you've come to fully understand the meaning of that name. So in other words, you always knew who the Wayab were going to pick from each tribe? Yes. According to the plan, each tribe was supposed to have been fully restored by the time I awoke. The 6 heroes successfully inherited the ancient names from 500 years ago, but once again it comes down to the deterioration of the Night Kingdom. Communication between the sacred flame and... Just like how the Ode of Resurrection failed. Exactly. It's just another tactic the Abyss is using against us. The Abyss may not possess intelligence, but its methods certainly aren't easy to counter. Okay. If we want to unblock that information from being passed on, my presence alone isn't enough. The ancient name-bearer must establish a greater connection to their name. So, I've tried my best to help them from the sidelines. Currently, Shalonin of the Children of Echoes, Kinich of the Scions of the Canopy, and Iansan of the Collective of Plenty have all been acknowledged by their names. During your adventure, you too earned the acknowledgement of your Wayab, Mualani. In the process, you gained the memories stored within your name. But we have less than a year! Yes, but we have no choice. We cannot start the plan until all the heroes have been gathered.
That's also why I haven't been able to take action despite the urgency of the situation. But if you knew this whole time, why didn't you just tell me about my role in all this? Wouldn't that make everything go a lot faster? Perhaps, but the opposite could also be true. Knowing your destiny too early could mean failing to realize your full potential. Just like your determination to save Kachina, I hope your commitment to this endeavor comes from your own strength of will, rather than a sense of obligation. So I suppose you're not going to tell us who the final two heroes are then? That's right. Their time is yet to come. Putting pressure on them beforehand will only hinder their development. Don't make it in I can only trust in the judgment of the Wyab. I have never believed I could solve this crisis alone. In fact, it was precisely because I chose Natlan's salvation lies not in its Archon or any singular. You're quite perceptive, aren't you? I thought I might get away with avoiding the topic. Huh? Oh, right! Even though I sacrificed my power, I still needed a contingency plan to ensure you would make it back from the Night Kingdom. After all, I was the one who allowed you to take that risk, and Mualani has an important role to play in my plan. In addition to their sentimental value, the items I stored here held a much more important purpose. Fuel. This seems to be Fuel? good. Yes. The stories embodied by those items are over time, they became imbued with a certain amount of contending fire. On their own, each item's power is limited. But together, their combined effect can prove quite useful in a dire situation. By burning those items, I was able to activate the contending fire stored. It was a rather crude approach, so all their power was depleted in an instant, as you can see. But aren't they all precious treasures? That's exactly why I dragged you all here. No matter... You have nothing to be sorry for. You all deserve my thanks, actually. If you hadn't saved the totem pole, that area of the Night Kingdom would have been forever lost to the abyss. And then, it would only be a matter of time before the Children of Echoes was met with disaster. Yep. Besides, when those heroes entrusted their if they knew those items helped save the present-day heroes of Natlan, they would not mourn their loss. Even when you put it that way, I still feel bad. There's no need. Remember what I told you about time? The people and the events of the past are never truly lost to us. We simply carry them with us in a different... If you still have regrets, let them fuel your resolve in the battles to come. Your deeds will become new legends and nurture new forms of power just like the items once stored here. Well, we'd still like to return the favor. Well, if that's the case, just treat me to a drink sometime. Now that Kachina has returned, we can finally hold the victory feast and celebrate your team's triumph in the Night Warden Wars. And we could all use the rest, that's for sure. Plus, you'll be able to silence everyone who doubted you. Still, now that I know the danger we're facing, having a victory feast doesn't feel right. Try not to let it get to you. It's important to stay calm. Worrying about it will only affect your judgment. All right. You should head out. I'll join you in a bit. ओके ठीक है काफी सारे रहस्य खुले हैं भाई आज When I was young, I used to sit by the hot springs and listen to the stories of warriors from all over Natlan. They attract people from all walks of life. Friends come easy here, no matter what tribe you're from. The people of the springs have never claimed the hot springs as their own private property. They are there to bring all hot spring buddies together. It's been really nice, seeing the children of my tribe get older.
It's helped me gradually understand the true value of the springs. I've witnessed their energy, their determination, their absolute passion for life. Even when they cause trouble, I never managed to hold on to my anger for long. It's unbelievable how quickly they worm their way back into my good graces. I'm certain Mualani will become a great warrior when she grows up. She possesses infinite potential. I can see it. One day, when I'm no longer in fighting form, I'll come here and tell stories to all the children, just like those warriors did for me. So you better get busy, Pyro Archon, or I'll end up running out of stories. Oh भाई, what is this story, man? Literally, ये क्या मस्त story है भाई. And she looks awesome, dude. सही में. Movika is like best यार. सही में. ये quest कर रहा हूँ और मेरा मन Our nation पूरा ऐसे is 100% हो रहा है engulfed कि in मुझे ये निकालनी है. darkness. Our tribes stand divided, and yet you promise victory in the distant future. The Abyss is a cunning enemy, one that I faced in battle many times. Were that not the case, I would never understand exercising this degree of caution. My rage will never know absolution, and my power will no longer aid you in victory. But you came to me because you knew you could convince me with just a single sentence. I understand your choice. The heroes of today will forge the path ahead with blood and fire. Just remember to earn us the victory we are owed. Otherwise, rest assured, I'll find a way to collect the debt. For Natlan. भाई, ज़रे रखवा लें. So, you're gonna head 500 years in the future to serve as the Pyro Archon again? But what about the you from right now? You're just gonna die. You can't ask her those questions and expect her to answer, my dear. The decision is hers to make, and she deserves our support. We will do everything we can to rebuild the tribes. Don't you worry. Even across time, we will all do our part to fight for Natlan's future. Yeah, Mom's right. We'll always believe in you, sis. Seriously, though? Dad should be here. Where is he? I imagine he didn't know what to say, so he chose not to come at all. Don't take it to heart, my dear. That's just who he is. Just remember, no matter what happens in the future, we will always love you. भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं सही में इसको एंजॉय कर रहा हूँ इस स्टोरी को. I'll come find you one day. Okay. Hi. I know I can't live that long, but I'll think of something. Hello Wolfex Gaming, welcome back to my live stream. क्या There has हालचाल? to be a way for us to meet again one day. If there's an answer out there somewhere, I'm gonna find it. So, don't forget about me.
If that's your decision, then you have my full support, Archon. May our children live to see such a lovely son. For Natlan! No one fights alone. Oh, nice one, buddy. Congratulations. The rules are my legacy. They shall grant us the strength to overcome the next tragedy. War forged the 6 tribes, taught us how to fight, instilled in us what it means to love. Who will be the one to bring this to an end? Okay, bye bye, Anu. Let's go. Hello, Entity Bhai, what's up? Welcome back to my live stream. We are the inheritors of memory and legend. Those who grew alongside sun and wind. Those who forged our own destiny and future. That is Natlan's fire. The lifeblood of our nation. Let's go. Nice one, buddy. Koichi! You here for the victory feast too? Oh, no. I knew Chaska would be here, so it's not that I don't want to celebrate Kachina and the others. I'm so glad she made it back. It's just... Well, I'll make things awkward if I'm around my sister right now. Ah, well, you two had a fun... She didn't cause any trouble during your... Yeah, she was super helpful. She gave us a lot of useful information about the Abyss. That's good. That's all I needed to know. Is there a reason you asked? Maybe it seemed unreasonable, picking that fight with her impulse to fight is extremely strong. Her mental strength helps her rein it in, but she still loses control sometimes. So what you're saying is... Okay, so maybe it sounds a little stupid, but it works pretty well. It helps her keep her cool for a little while, at least. Anyway, I'm just glad you were able to make it back. What? Do you really have to go that far? Can't you just talk it out? No way. Chaska never opens up about her own pain, especially to her family. I appreciate... Oh, and if you ever need a doctor, you know who to find. Huh. Who would have thought there was a deeper reason behind their art? In the end, it's all the... तो ठीक है, अब हमें जाना है यहाँ से इधर। आ जाइए। पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन अगर क्लिक कर दिया तो हमको ही पका। अरे वाह, अलग ही बात है फिर तो। Next level game. Let's give a huge round of applause to our brave young warrior, Kachina! Woohoo! Well done, Kachina! Thank you, everyone! I always knew you could do it, with so much potential. You're one to talk. Don't think I didn't know you were the first person to abandon your team. I'll be dealing with you when we get back. I had no choice. My friend invited me. I couldn't just say no. Oh, really? So you weren't just trying to get ahead in the first round? I wasn't, I swear. I just happened to find that bearer injured in the wild, so I stopped to bandage his wounds.
When he insisted on repaying the favor, what was I supposed to do? I'm just one person. I figured Kachina would have no trouble replacing me. But the fact of the matter is that after your departure, everyone... I'm really sorry, Kachina. It was wrong of us to abandon you like that. It's amazing that you still made it all the way through to the Night Warden Wars. So, what about you guys? Did you make it? Our team captain drank too much the night. Serves you all right. No sympathy from me. All right. There's no need to be like that, Uncle Pakal. Dear friends, I'd like to say a few words. Firstly, I'm grateful to my friends and our great Archon for helping to bring me back. This traveler and his companion Paimon are some of the strongest people I've ever met. They've agreed to let me learn from them. With their help, I believe I can become even stronger still. And let's not forget my good friends, Moalani, Chaska, Kanich, and Ayan-san. They all helped the traveler and Paimon. Yes, भाई इसे वापस ले आ चुके हैं हम. इसको तो हम previous stream में ही लेके आ गए थे. Well said. And आज थोड़ा सा मोविका के साथ बातचीत हुआ. आज मोविका की अलग सी स्टोरी देखने को मिली. अरे भाई कितनी बड़ी डीएलपी है. मोविका की एंट्री कैसी थी भाई, एकदम एपिक भाई. मतलब मुझे ये क्वेस्ट करने के बाद भाई मेरा मोविका निकालने का मन और भी ज्यादा पक्का हो गया. अब चाहे जो हो जाए मोविका अपने अकाउंट में आके रहेगी भाई. I really need मोविका भाई अब तो अपने अकाउंट में, चाहे जो हो जाए. I'm definitely gonna get it. Like इसकी बाइक की एंट्री, इसके जलते हुए फ्लेम वाले बाल अलग ही है भाई. You look like you've still got questions. Ask away, because they had their own lives to live. The thought of telling them, abandon your families and everyone you love, and come with me to the end of time. For in 500 years Natlan will be destroyed, you could just as easily point out that everything in this world would come to an end. Imagine if I said, let's leave right now, and go save the sun because it'll flame out in a few million years. It would sound quite ridiculous. I couldn't make them shoulder that burden with me. Besides, every generation will have its heroes, this one included. The plan could still work without them. Or, of course, without me. But since I was the one who came up with the plan, I felt duty-bound to see it through to the end. I'm suddenly remembering that portrait in your room. Was that your family from back then? अभी तो इतना खास ऐसे भाई इसका ये स्टोरी का समझ में तो नहीं आ रहा, बट इतना तो है कि मतलब कुछ स्टोरी यहाँ पर बेसिकली कुछ हीरोज के रिलेटेड है कि मतलब ये जो पूरा अभी 500 साल तक में हमारा ये नेटलैंड डिस्ट्रॉय होने वाला है, मतलब कुछ तो वॉर शुरू होने वाला है इसमें 500 साल के बाद. लेकिन उसको रोकने के लिए कोई 6 हीरोज हैं, जिनमें से 4 हीरोज तो हैं बट 2 हीरोज अभी कैपेबल नहीं है या फिर रेडी नहीं है, कुछ ऐसी चीज है. ये सब चीजें हुई हैं एंड साथ में मोविका अपनी पावर्स लूज कर चुकी है, उसने अपनी पावर्स को भी सैक्रिफाइस कर लिया है एक पॉइंट पे आके. सो अभी के लिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा इनके साथ काफी ज्यादा गलत सीन हो रहा है अभी. मतलब ये अभी फंस चुके हैं थोड़ा, इन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी ये काम है बट खतरा मंडरा रहा है चारों तरफ से इनके आसपास. And there can be no war without loss. हाँ, वो 500 कंप्लीट होने में सिर्फ 1 ईयर ही बचा है. तो मुझे तो अभी तक इतना ही स्टोरी समझ आया, कुछ खास इतना ज्यादा इसके अलावा तो मुझे आई डोंट नो कुछ है कि नहीं, मुझे नहीं पता भाई इसके अलावा. I suppose, but so what? Don't forget, time takes many forms. The past, even if the future ends in destruction, there's still no reason to give up on, and it's precisely because we humans cannot know our fate that we will never give up on our struggle. This is a pivotal moment. We are still 3 to be precise.
There's one further hero who I'm hoping to get on my side, whatever it takes. 5,000. Your resistance to the corrupting power of the Abyss is truly remarkable. It would, if you agree to join us, you will not only gain my full... Ancient names can be forged? They can. मुझे नहीं पता भाई. Possessing an ancient name Actually would मैंने mean that तुक्का बैठा your था, but adventures मुझे in नहीं that पता land कितने are years की है. recorded in full. Your stories would be आप ही remembered बता by दो. our people for all the मुझे years इसका to साल come. नहीं पता भाई. ये The कितने Ode of year की है. Resurrection may have temporarily lost its power, but still, take this as my personal guarantee that I shall never let you fall. Just like in the Night Kingdom, I will be there for you. That is a promise I will fulfill at all costs. This nation always honors its heroes. Yeah, we can't... Wonderful. We've never forged... Okay, so let's go. हमारा ये वाला हो चुका है quest complete. Nice and good. My lord, we've received... Although your injury complicates things, this is most certainly the opportune time to seize the Gnosis. Victory and defeat are rules, not outcomes. Okay, I've never taken advantage of an opponent. As for you, I must confess, ये इस captain के I साथ did क्या not must expect fight that हुआ था little movie trick का. of yours to save the day. No matter how dense the fog, as long as the sun remains, we cannot turn day into night. She could have dispelled it. She simply chose not to. You don't have much time. And you're injured on top of that. What do you plan to do next? I'm beginning to see just how useful you may turn out to be. You heard something from here, didn't you? Okay, I don't know, but हमारा ये quest complete हो गया और हमें और सामान मिल चुका है यहाँ से. So let's go. ये सब सही है. वैसे यहाँ पर homeland इसके ये वाले फिर से आ चुके हैं नए. So I don't know ये करना चाहिए कि नहीं, ये बाद में देखेंगे. Let's go. बाकी और चीजें भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है मेरे पास. वैसे मुझे एक सेकंड दो, मुझे ज़िबई का ना एक ये देखना है. टैलेंट्स मैंने इसको लेवल 7 तो कर रखा है, सो इसका एक ही चाहिए. एंड क्या ये मेरे पास है? ये क्राफ्टेबल 2 ही है मेरे पास. सो क्या ये मैं निकालने जा सकता हूँ? कि निकालने में से जा तो सकता हूँ मैं ये वाला. सो क्या लगता है मुझे ये करना चाहिए इसे? ये भी वैसे आई गेस मैं क्राफ्ट कर लूँगा ये वाला. सो ये लेवल 8 का हो जाएगा तो मस्त हो जाएगी मेरे मूवी ये ज़िबई और भी ज़्यादा. सो इसे हम कर सकते हैं, कर लो. ओके ये भी कर दिया जाए. आ जाइए ये भी कर लेते हैं हम. तो लेट्स गो. इसके वाले में चलते हैं हम. टैलेंट्स को अपग्रेड करने के लिए जो मुझे चाहिए. सो लेट्स गो. इसमें चलता हूँ मैं जल्दी से. ये निकाल लेते हैं. यस भाई स्किल 10 तो मैं कर लूँगा. बाय द वे रोज़ेरिया का कोई बिल्ड मुझे बता सकते हो? रोज़ेरिया का कैसा बिल्ड रखना चाहिए हमें? रोज़ेरिया का बिल्ड भी सजेस्ट करना भाई मुझे इन फ्यूचर ज़रूर. टीम के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके बट मुझे एक्चुअली पता है क्या है, मुझे चाहिए बढ़िया सा क्रायो यूनिट. मतलब एक क्रायो अप्लाई करने वाला चाहिए. बाकी तो मेरी यही टीम रहेगी. अपना ये ज़िबई, फ्यूरिना प्लस अपनी कोलम्बिना. साथ में फोर्थ कैरेक्टर में एक अच्छा क्रायो डीलर रखना चाहता हूँ. मतलब क्रायो अप्लाई करे अच्छे से. ये ज़िबई के फाइट के लिए ही चाहिए मुझे क्रायो अप्लायर. ओके नॉबलेस रखा जाए. ठीक है. ओके गॉट इट. नॉबलेस से बेसिकली होगा क्या हमारा, उससे एनर्जी रिचार्ज बूस्ट अप होता है जैसे ना. Light compels you. Be cleansed. The sky flames, the glazed moon shines.
can't run from death. ओके, वेलकम बैक आरू। लेट्स गो, आरू भी आ चुकी है यहाँ पे। May I present? You got this! Be gone, Shadow of Darkness! Without further ado, Divine Light, shield them! Light the dust! Be cleansed! Leaving so soon? So let's go. Noblesse buff when the noblesse using character use burst. ओके सही है। अगेन मोटिव भूल गए। मोटिव क्या मोटिव? अरे नेटलाइन का क्वेस्ट कर रहा हूँ यार मैं। नेटलाइन का क्वेस्ट अभी किया ही था, ये मैं जस्ट अभी ये निकालने आया था थोड़े। आप इनसे पूछ सकते हो, अभी मैं नेटलाइन का ही क्वेस्ट कर रहा था। ये जस्ट मुझे ये दिख गया तो फिर मैं करने के लिए आ गया, बिकॉज कर सकता हूँ अभी। सो थोड़ा सा मैं ये लेने आ गया था जस्ट। मंजिल को बुला के अगर जिया तो क्या जिया, ये वाला क्वेस्ट तो खत्म हो गया। हाँ वो वाला क्वेस्ट अभी खत्म हुआ, सो इसलिए मैं थोड़ा करने आया था। बैलेंस में मुझे एक सेकंड देख लेने दो, इसका कितने क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं। ओके हो चुके हैं क्राफ्टेबल आई गेस। सो एक और अपग्रेड में दे सकता हूँ इसे। सो चलिए चलते हैं यहाँ पर से। बैक करता हूँ, मैं कंफर्म करता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे पास रेजन्स खत्म हो गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है रेजन्स तो खत्म हो गए होंगे। था ये एक्ट 2? ओके आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं है पूरा, चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी, अभी फिलहाल के लिए एक चीज कर लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से चल के, एक चीज खत्म करते हैं। ओके वो एक्ट 2 था। अच्छा एक्ट 2 था, सही है भाई। पुराने प्लेयर्स को पता ही होता है सही में, वो खुद ही ऐसे गैस करके बता देते हैं। हैट्स ऑफ टू यू मैन, सही में सैल्यूट टू यू गाइस। चलिए यहाँ पर से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और जल्दी से इसे क्राफ्ट करते हैं। आ जाओ, यहाँ पर मैं क्राफ्टिंग टेबल पे आया एंड क्राफ्टिंग टेबल पे जल्दी से अपनी जिबाई के लिए वो बना लेता हूँ मैं, कंफर्म करके। यहाँ पर लेट मी सी, सबसे पहले मुझे ये चाहिए, ये मैंने बनाए। नशे हो रहे हैं कृष्ण, अरे वाह, कौन से वाले सस्ते नशे? जा रही हैं। ओके ठीक है, आपको नींद आ रही होगी, गुड नाइट आरू, आराम से आप सो जाओ। तो बाय द वे मैं यहाँ पर ना वो लेता हूँ, जल्दी से ये बनाते हैं। आ जाओ, एक मैंने ये भी बना दिया, ठीक है कंफर्म करते हैं इसे। सो लेट्स गो, आ जाइए। ये भी बना के अब जिबाई का लेवल 8 हो जाएगा। सो लेट्स गो, ये मैंने कर दिया यहाँ से जिबाई का ये वाला स्किल लेवल 8। लेट्स गो, जिबाई का ये वाला स्किल अब लेवल 8 हो चुका है। लेट मी सी, वैसे इसका ना रोज़ेरिया का ना, जहाँ तक मैंने देखा था, रोज़ेरिया का एक वो सेट उसने रिकमेंड किया था, एक वाला किसी ने रोज़ेरिया का ना एक सेट भी रिकमेंड किया था। लेट मी सी, मेन एफिक्स, बट मेन एफिक्स नहीं, यहाँ पे सेट टाइप। हाँ सेट टाइप में अगर मैं देखूँ तो ब्लिजार्ड एम्बलम ऑफ सेवर्ड फेट, हाँ यही था आई गेस। एम्बलम ऑफ सेवर्ड फेट क्या करता है? एनर्जी रिचार्ज देता है और इंक्रीजेस एलिमेंटल बर्स्ट डैमेज बाय, ये वाला था बेसिकली। सो इसमें अगर मैं ये वाला लगा दूं एंड उसके साथ में अगर हम यहाँ पर दे दें इसको, बेसिकली हमें किस बेसिस पर करना चाहिए? इसका 80k ये करने को बोल रहा है, तो 80k अगर मैं दे दूं, नॉबलेस बेटर, ओके नॉबलेस बेटर वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्रायो डैमेज बोनस दे दूं एंड यहाँ पर क्रिट रेट दे दें, गॉबलेट में आई गेस ये नहीं देना चाहिए, क्रायो डैमेज बोनस देके क्या करूंगा मैं, ये यही देना चाहिए। एलिमेंटल मास्टरी, अगर इसको हम
एलिमेंटल मास्टरी की बजाय अगर मैं इसको ER देना चाहता हूँ किसी तरीके से, ER अगर इसको मिल जाए ना, इस सपोर्ट सेट एंड एम्बलम इज DPS। ओके, एम्बलम DPS है, सो नोबलेस ही देते हैं आई गेस। ठीक है, इसे मैं नोबलेस और ब्लिजार्ड कर देता हूँ, ये वाला करके कंफर्म। एंड यहाँ पर हमने क्रायो डैमेज बोनस दिया है एंड साथ में 80k में मैंने इसको ये दिया और इसको क्रायो डैमेज बोनस भी है एंड क्रिट रेट है। सो आई गेस दिस इज गोना बी बेटर सॉर्ट बाय ये वाला अगर मैं करूँ। सो इसमें आई गेस मुझे इसे एनर्जी रिचार्ज एंड साथ में क्रिट रेट, क्रिट डैमेज दे देता हूँ मैं, कंफर्म दिस, लेट्स गो। और सेकेंडरी माइनर फिक्सेस में और यहाँ पर आई गेस मैं इसे एलिमेंटल मास्टरी दे देता हूँ। ठीक है, सो आई गेस ये ठीक है, सेव कॉन्फ़िगरेशन करें। सो इसका ये बन रहा है सेट, बेसिकली ये ब्लिजार्ड सेट बन गया है ना, 2 पीस ब्लिजार्ड सेट बना है। इसमें अगर मैं ये बनाऊँ तो सो आई डोंट थिंक सो ये वाला मस्त है। चेक अल्टरनेटिव्स करूँ क्या, ब्लिजार्ड हटाओ। ओके, ब्लिजार्ड हटाया जाए, ठीक है। इसको मैं इसी को एडिट नहीं कर सकता क्या, वेट अ सेकंड, इसे मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ आई गेस, इसे डिलीट ही करना पड़ेगा। इसे एडिट करने का ऑप्शन होता है क्या, चेंज सेटिंग्स, हाँ चेंज सेटिंग्स करता हूँ और इसमें मैं ब्लिजर्ड हटा रहा हूँ। लेट्स गो, ब्लिजर्ड मैंने हटा लिया, कंफर्म करता हूँ, लेट्स गो। चलिए सेव कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो अब आ चुका है यहाँ पर, नोबलेस नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं होगा। ओके, 4 पीस नोबलेस, ठीक है। तो ये वाला कौन सा सेट हो रखा है, ठीक है। क्रायो डैमेज बोनस आ रहा है क्या, वेट अ सेकंड, मैंने क्रायो डैमेज बोनस तो वो कर दिया ना। चेंज सेटिंग्स अगर मैं देखूं तो क्या चीज दूं मैं इसे, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज, एलिमेंटल मास्टरी, सब सही तो सेट है। ओनली आर्टिफैक्ट्स दैट आर नॉट इक्विप्ड, ऑल। अगर मैं ऑल कर दूं, सेव कॉन्फ़िगरेशन करें, नोबलेस पे बस जितना हो सके ER भर दो। ओके ठीक है, चेंज सेटिंग्स, ER भरने का ट्राई करते हैं फिर। एलिमेंटल मास्टरी, वैसे मैंने ER ही कर रखा है भाई, क्रायो डैमेज बोनस, हाँ क्रायो डैमेज बोनस नहीं करना है यहाँ पर बेसिकली। अब हो जाएगा, एलिमेंटल मास्टरी में दे देता हूँ, आ जाइए, अब आई गेस हो जाएगा। एलिमेंटल मास्टरी कहाँ पर है, मेरा एलिमेंटल मास्टरी, अगर मैं ये करके सेव कॉन्फ़िगरेशन करूँ, सो अब आई गेस ये बना है ना, अब ये बना है, बट वो ड्यूरिन पे लग रखे हैं यार, ये फिर वो हो जाएगी एक्चुअली, मेरा ड्यूरिन वीक बन जाएगा इससे तो। वेट अ सेकंड, चेंज सेटिंग्स, ऑल नहीं, दैट आर नॉट इक्विप्ड, अब ठीक है आई गेस। अभी भी 2 पीस सेट क्यों बन रहा है यार ये सेटिंग्स अभी तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता बाद में। ओके ऐसे मत करो, डायरेक्ट आर्टिफैक्ट्स देख के करो। ओके डायरेक्ट आर्टिफैक्ट्स करो, ठीक है समझ गया। सो इसे मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। वैसे अगर मैं वो करूँ सीधा यहाँ पे ये लगाता हूँ, आ जाओ, यही लगाया। मेन एफिक्स में से मैंने 80% और एलिमेंटल मास्टरी, कंफर्म, लेट्स गो। एलिमेंटल मास्टरी और सर्कुलेट में मैंने इसे क्रिट रेट दे दिया, क्रिट रेट नहीं, अगर मैं इसे क्रिट डैमेज दे दूँ, हाँ क्रिट डैमेज दे देते हैं आई गेस, क्रिट डैमेज दे दिया। एंड अब मैं इसे सेव कॉन्फ़िगरेशन करूँ, सो अभी भी ये 4 पीस नहीं बना रहा है एक्चुअली। चेंज सेटिंग, मैं ये सारे ना हटा रहा हूँ, लेट्स गो, ये सारे हटा दो और अब कंफर्म करके इसे सेव कॉन्फ़िगरेशन, मेन एफिक्स, ठीक है मेन एफिक्स 80k में दे देता हूँ, 80k, या फिर यहाँ पर एलिमेंटल रिचार्ज, ER भरना है ना मुझे इसमें, ठीक है ER भर देता हूँ मैं, लेट्स गो। ER करके सेव कॉन्फ़िगरेशन करें, मेन एफिक्स कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है ये कर नहीं सकता हूँ मैं। एलिमेंटल मास्टरी आ जाइए, एलिमेंटल मास्टरी, और यहाँ पर भी मैंने इसे क्रिट डैमेज पे सिलेक्ट करके कर दिया।
अब जरा सेव कॉन्फ़िगरेशन करूं, अभी भी 2 पीस सेट ही बन रहा है। ये बाद में ही करना पड़ेगा एक्चुअली, मुझे लग रहा है इसे अच्छे से मैं पूरा ग्राइंड करके बढ़िया बनाऊंगा। आई गेस फास्ट इक्विप देते हैं, और अभी के लिए जो है नॉबलेस ही लग रखा है, तो ठीक है यही मैं रखता हूँ अभी के लिए, तो नॉबलेस ही लग रखा है। विद कॉन्फ़िगरेशन में ये नॉबलेस ही रखा हुआ है 4 पीस सेट, और देखा जाए तो ये इसको क्रिट डैमेज दे रहा है, सो आई गेस मुझे इसे ही अपग्रेड कर लेना चाहिए ना, ये अच्छे से वर्क कर लेगा आई गेस। ये उन्हीं से पूछ लूंगा मैं, क्योंकि पहले से ही मेरे ख्याल से ठीक लग रखा है। ये क्रिट रेट पर कर रहा है, एचपी पे है, ये भी एचपी पे है, ये 80k पे है, और ये एचपी पे। देख लूंगा मैं उनसे वो बात करके, ऐसे तो ये मेरे ख्याल से सही से वर्क कर लेगी। एंड आई थिंक सो अब मुझे चलना चाहिए यहाँ पर सीधा अपनी क्वेस्ट में। सो लेट्स गो, हम फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी क्वेस्ट। सो आ जाइए, नेटलैंड में चल के अपनी क्वेस्ट को मैं वापस से शुरू करने वाला हूँ। वैसे इसका वेपन मुझे देखना है, इसके वेपन मैंने क्रिट रेट दे रखा है, और अगर इसे एनहांस देखा जाए तो इसे एनहांस में कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं ताकि ये मस्त हो जाए थोड़ा यूज़ करने के लिए, और थोड़ा कर देते हैं यहाँ पर 13.1% हो गया। ठीक है, और ये जहाँ पर से मिलेगा उसमें अभी मैं जा सकता हूँ आज। ठीक है, जा तो सकते हैं। वैसे एक काम करते हैं, चल कर ना हल्का सा फाइट करके आते हैं इसमें भी। एक बार फाइट करूंगा मैं इसमें। लेट्स गो। डोमेन ऑफ फॉरेस्ट्री ये देगा। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एंटिटी तू लड़का है या लड़की? अरे भाई खतरनाक। लेट्स गो। There you are, eavesdropper. Surge. Let me amuse myself a little. The sky's clear, the glaze moon shines! Barrier. Like the dust! Are you? Let me amuse myself a little. The more, the merrier. Like the dust! Assistance. कंटिन्यू करके देख लेता हूँ। लेट्स गो। Are you here to play with me? Let the world come Wait. Light compels you. Without further ado, divine light, shield them! Look at me.
decisions shine. Here we go. दो तो मतलब एक अगर मैं कर लूँ ना तो इसका ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं इसका। फाइनल सेशन भी नहीं है, फाइनल सेशन नहीं है आई गेस, है ना। अभी आई गेस ये 90 लेवल तक जा सकता है। सो आई गेस इतना भी काफ़ी है वैसे। अगर मैं इसे असेंड कर दूँ तो इसका क्रिट रेट नहीं होगा, इसका सिर्फ बेस अटैक बढ़ेगा। आई गेस इतना काफ़ी है इसका बढ़ाने के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से अब निकलता हूँ मैं नेटलाइन की तरफ। आ जाओ। वैसे हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं की है यहाँ पे। Thank you for add. चल ये भी कर लिया यहाँ पे। सो लेट्स गो। अभी जरा देखते हैं यहाँ पर। सो ये वाला है ना, टू एडवेंचर, ये रहा। ठीक है, आ जाओ। तो अभी मुझे क्या करना है? ओके लेट्स गो। अपनी क्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं इसी के साथ। Nice and dude. I see. No, since we're facing... All right. Hi, Catherine. It's us. Got any new commissions? Ah, you two have come just in time. I've got some good news. The Pyro Archon has finished assembling her forces and stationed them all across Natlan. Given how the Abyss has ramped up its activities lately, we can no longer afford to act only after receiving news of an invasion. So the Pyro Archon suggested that the Scions of the Canopy and the Adventurers Guild focus on collecting and disseminating intel. That way, we can stay informed of everything that's happening across the land. Once we receive word of it... Yes, precisely. So please also take a chance to relax, you two. You've been working hard these days, and this will be a good opportunity for some So that's the plan! Whew, we can finally stop and take a break! But the less work we take, the less we'll earn. But the threat of the Abyss is still far from... Paimon knows that! It's not like... The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. The people here generally see it as something like an acute natural disaster. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. Oh, right.
Most people have no idea just how bad this... Huh? Is that the Traveler in Paimon? Hello? Oh, hey, Kachina! Are you feeling better now? Yep. Now really isn't the time to stay home and recover anyway. I heard that the Pyro Archon is gathering warriors to be stationed in... Don't think I haven't heard about all the things that you've been doing. With everyone working so hard, I've got to do my part too. Oh, by the way, Shilonen told me that she was ordered to... She said that she's all set, and we can head over whenever we're ready. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. Paimon still can't believe anyone could forge those things. Shilonen is a true master. Not only can she forge ancient names, but also all sorts of new and fun things. She's always got a pile of commissions on her plate, so you usually have... Well, I've already signed up as a warrior, so all I have to do for now is wait for my assignment. If it's okay, maybe we can go to see Shilonen together? She wouldn't turn me away, right? I mean, I hope she wouldn't. Hey, have some confidence in yourself. What happened? Second thought, maybe I'll just find a hole in the ground to jump into and hide for a while. Beyond the smoke and mirrors. Chapter 5, Act 3. Let's go. Begins now, baby. Here we go. यहाँ बस चलते हैं हम आगे. आ जाइए. अब कहाँ पे जाना है? So basically हम. Okay, so we have to go over here. आ जाइए, यहाँ पे चलते हैं. Let's go. And जैसे एनटीटी भाई भी आते हैं, मैं एक चीज पूछने वाला हूँ उनसे रोज़ेरिया के बारे में. Because अब जो सेट में रन कर रहा हूँ, so अब कैसा रहेगा? Hello, Dream Alala. Dream Lalala. Welcome to my live stream. What's up? So नीचे की तरफ आ गए. ठीक है, let me see कहाँ पर है ये. Okay, वहाँ पे रही, वो रही. Let's go. So हमें शालिन के पास जाके उससे बात करनी है. चलो लें. Shilonen, I brought the person who needs an ancient name. He's super amazing, and I've already learned tons of stuff from him. I can Yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Plus होगा लाला. Wait, A Minecraft entity. Oh, Outlanders? nice one, buddy. Yep, we're travelers who just So arrived you in love Natlan not too Minecraft. long ago. No, That's a I great mean, thing. I was aware that you're travelers. Huh? You're saying the Pyro Archon didn't tell... No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. But I seem to understand where the true difficulty lies Yes, now. right. मैं Minecraft भी खेलता हूँ, but Minecraft की stream अभी थोड़ी देर बाद I आएगी. wouldn't go that far. I'm used to it, I guess really. कल हमारा Roblox का plan बन need a सकता है. moment So to हमारा कल process Roblox things. बनेगा. The And Pyro other games Archon's like requests are always Among Us या difficult to फिर कोई fulfill, और and game बनेगी. we used to So argue a Minecraft lot. को I guess हम परसों Honestly, it's probably for the या फिर better उसके that she अगले didn't दिन bring हम this up Minecraft at को the दे time. सकते हैं. So just wait for Anyway, next Minecraft I can't stream. argue with her if she isn't here, And and make it'd sure be to like, pointless share, to and take my subscribe my anger out on channel someone because we are else. so close to 600 subscribers. Ooh, just because I understand. As you probably know, we forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Yeah! I saw countless feats recorded in their adventure handbook. It felt like they could do anything. But they were all performed out. Yeah, that's right. Then those deeds haven't been recorded by the Night Kingdom. To take it one step further, even if you had performed heroic deeds in Natlan, as an Outlander, only memories and experiences that have been... Even the greatest of craftsmen can... Seems the Wyatt don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone.
Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Why do I feel like this has happened before? Ugh, don't remind me. You mean... Well, what else can I do? If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Oh, not only has she accepted the task, but now she's looking for silver linings? Yeah! Let's see if we can... The key is getting the Wyab to somehow acknowledge the traveler's existence. We heard the voice of a Wyab when we were in the Night Kingdom before. We even had a whole conversation with her. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every tribe has their own Wyab. How do we know if the one you met is indeed the best one for us to talk to? Plus, considering the unprecedented... I don't know. That requires a level of knowledge that I do not possess. We need to find a consultant who's an expert on all things Night Kingdom and Wyab. The first person... Oh, we've heard a person who can make something... Still, I've heard that to get her help, you have to be extremely patient with her and know how to keep her spirit up. I hate to break it to you, but... Huh. Well, yeah. At the cost of her... Huh? Great going, Moeka. We're already off to a rocky start here. In that case, I guess I'll also write you a letter on your behalf. If you can find someone to deliver it and mention some good things about you, then that should help too. Oh! Let's ask Kanich to deliver the letter. He understands the whole situation, and is already a familiar face to her. Okay. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Alright, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Great! Then I'll go contact him right now. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the Statue of the Seven later. Sounds good! We'll take a stroll in the meantime. We meet again. Kachina told me everything. I'll deliver the message to the Masters of the Nightwind and convince Sitlali to give you a chance. I'll also take this chance to explain what happened to the Spirit Speaker Stone and offer her an apology in person. I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. It's alright. We're all working for the sake of the Pyro Archon's plan, after all. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Because we all saw a hero of the past rematerialize right before our eyes. And then Moalani said that a ton of knowledge and memory suddenly flooded her brain. The Pyro Archon explained everything when we came back from the Night Kingdom, including the reason behind the appearance of the hero, as well as the current state of the Night Kingdom. Right. She mentioned there are 6 heroes and that Shilonen is one of 4 that have already been acknowledged. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. I have another piece of intel to share. We've pretty much identified the person who rescued the captain in the state. His name is Auroron, and he also hails. That's why his disappearance went unnoticed. By the time Sitlali finally realized that he was gone, no one had heard from him for quite a while. Sitlali? That's right. Auroron was an orphan raised by the chief of the Masters of the Nightwind and many— Odd, huh? Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Auroron, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. That's right. So in that sense, Auroron and Sitlali actually have quite a bit in common, which is why they get along pretty well. Huh. Makes sense.
But Paimon wonders how Citlali could be the first one to notice Auroran's disappearance if she spends the whole day in her room. As of now, Citlali is probably eager to Huh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Auroran and the captain's whereabouts? Yes. If you're all on board with, even though I don't think Citlali is the kind of person to turn down an order from the Pyro Archon. Yeah. Good idea. Plus, we kinda owe her one and... Then, Sure. I'll head out right away. Take care out there, Kanit. I'll be heading back as well. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple... Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Hey, Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have, bad news. Citlali... Huh? You mean she didn't even bother to give Kanichi a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night Wind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Okay, so let's go. Alright. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Huh. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her. If that's what aging does to you, Paimon never want... Oh, really? So... Who's there? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled... Huh? Citlali. Oh, Citlali. Citlali. Wait, you're Citlali? You're Citlali. Granny Eatstily? Okay, Citlali. Yes, Granny Eatsley. But emphasis on Eatsley, not Granny. Ah, you must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran.
The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. It was an honest— What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you, it's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to— I received Kenichi's letter, but, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly— At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. What's with that? Was she— When the Masters of the Night wins, so they struggled to— Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation— Okay. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an Outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. In no one's Yeah, that's why we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves, a weary yet free soul. Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the Traveler gonna be okay? Shoo! That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. Thank you. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back— The Lord of the Night? But something this important is the Lord of the— Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the Lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other. But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream.
But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. I can go. It'll probably be a long... Sounds good. Then we'll... Yep, we'll be... Okay, so let's go. ये जा रही है यहाँ से. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. Okay. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. And interestingly enough, I saw some slash marks in the... Oh, sounds like the Fatui... But... that's not to say that I believe he's total... In any case, I'm truly... You can count it! Alright, then let's start by heading to where... Okay, ठीक है. Let's go. So ये वाला quest भी complete हो गया. Nice, dude. Commissions मेरी complete हो गया. तो इसमें ये क्या रहा है? अच्छा, सुमेरु. यहाँ पर नेटलैंड का कुछ नहीं आ गया. ठीक है. गाइड में से नहीं निकालता हूँ. चलो, एक फेट मिल गया मुझे. इसी के साथ लेट्स गो. ठीक है. एक फेट मिल चुका है हमें. एंड बाय द वे इसके 7 फेट्स हैं ना मेरे पास. लेट मी सी. यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? आई गेस कर तो सकूँ. ये जो है वैसे इसका तो मैंने कर रखा है. इसको भी मैंने कर रखा है. ये भी हो चुकी है. ये भी हो चुका है. इसको मैं कर सकता हूँ. इसे ज़रा लेवल अप करने का ट्राई करते हैं. आ जाइए. ये मैंने करा लेवल अप. एंड इसे अगर मैं असेंड कर पाया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती. बट कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ये नहीं है. बट असेंड कर सकता हूँ इसे मैं इजीली. ये भी लेवल 20 की है. 1, 2, breathe, 3. ये भी लेवल 20 की होके सारे के सारे बेसिकली मैंने कर रखे हैं. बट ठीक है. जाहोला. सो अगर इसे मैं लेवल अप करने का ट्राई करूँ तो इसे लेवल अप करने का ट्राई करते हैं. ओके, सिक्के लिए भी ये चाहिए. ठीक है. ठीक है. सॉरी बाय द वे. इसे भी अगर मैं करूँ. नहीं, इसे नहीं करना. अच्छा, तो ठीक है. यहाँ पर सब और मैं देख लेता हूँ और क्या क्या. यहाँ पर गोरू है. तो गोरू को अगर मैं दूँ तो गोरू को करने के लिए ओके, इसको भी करने के लिए चीज़ें चाहिए. वाह भाई, हर एक को डिमांड है. हर एक की अपनी अपनी डिमांड है. इसकी भी अपनी डिमांड है भाई. इसे असेंड में दे सकता हूँ. ठीक है. इसे असेंशन दे देते हैं यहाँ से ताकि मुझे यहाँ पर ये मिल जाए. ठीक है. लेट्स गो. एक मिल चुका है ये फेट. एंड यहाँ पर इसे भी अगर मैं लेवल अप नहीं देना बेसिकली मुझे इसे. मुझे यहाँ पर बाकियों को देखना है. ठीक है. इसे भी लेवल अप ना देते हुए लेट मी सी वो वाले कैरेक्टर किधर गए. जी नहीं. ओके, सो इससे अगर असेंड करना हो तो इसे असेंड करने के लिए ये करना है. वो तो कलेक्ट करने पड़ेंगे. ठीक है. ये हल्के से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. जल्दी से चल के आ जाओ. ओके, इतनी ज़्यादा स्नीज क्यों हो रहा है मुझे आज? अजीब बात है. नहीं यार.
ठीक है, यहाँ पे कितने? एक ही है भाई। एक के लिए मैं क्या ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे? और कहाँ पे मिल सकते हैं मुझे? वैसे सेंट्रल एरिया में भी बहुत ऐसे मिलते तो थे, आज दिख ही नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पर है ना। लेट्स गो। यहाँ पर 8 मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट, लेट्स गो। 2 ही चाहिए होंगे मुझे बेसिकली, सो लेट मी जस्ट गेट देम फास्ट। ओके, लेट्स गो। चलो भाई, Mathematics. ये वाला मैं मारने वाला हूँ अब। इसका एक 10 का विश मारते हैं आज। लेट्स सी इस 10 के विश में क्या मिला। ओके, कुछ तो मस्त मिला मुझे कैरेक्टर। लेट मी सी। ओके, आई गॉट ईफा। इसमें से मुझे ईफा मिला है इसमें। आई गॉट वुल्फ ग्रेवस्टोन, 5-स्टार वेपन। व्हाट्स दिस? भाई ये कैसा वेपन है? मुझे जरूर बताइएगा कि ये कैसा वेपन है भाई। अभी के लिए क्या यहाँ पर वो आए हैं?
foundation of all things. If you're interested, I can teach you some arithmetic. First, hold out your hands. So 34 में अगर अब बैनेट अगर आ सके ना तो मैं निकाल लूंगा उसी से, सही रहेगा। Why hits an opponent, it will restore 6 energy for Ifa. One such energy restoration can be triggered once every 8 seconds. ठीक है, let's go. इसका भी constellation C1 unlock हो गई. So let's go. ये बढ़िया था. Actually that was great. That has just happened with me and एक काम करता हूँ मैं वो वाली quest भी कर देता हूँ. So let's go. एंड बाय द वे अपने कैरेक्टर्स को एसेशन अगर मुझे देना हो तो लेट मी सी, ये वाला अगर मैं इससे भी ऑटो ऐड करके इसमें कर दूं कंफर्म, सो क्या मैं इसे कर सकता हूँ? ओके, असेंड कर पा रहा हूँ। तो लेट्स गो, इसे सेशन देते हैं और यहाँ पर से इसका भी एक फेट मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। सो लेट्स गो, ये किसने मुझे फेट दे दिया यहाँ पर? इसके पास तो होगा नहीं फेट, इसके पास भी फेट नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी फेट नहीं है, इसके पास भी नहीं है। नो 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 नो, ये मुझे दे सकता, ठीक है। इसे असेंड करना हो सो इसके लिए मुझे ये लेने हैं, गो टू प्ले। लेट मी सी, ये मुझे कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे। सो ठीक है, ये कलेक्ट करने चलता हूँ, आ जाओ। ये कौन सा वाला एरिया? ओके, ये इलेक्ट्रिकल एरिया, इलेक्ट्रिकल टाइप एरिया है।
Huh? तो इसके पास तो जाना है लाइक इसके पास में कोई टेलीपोर्टर ही अनलॉक नहीं किया मैंने, ठीक है, वरना दया से भी मैं निकाल सकता था, पर ठीक है अगर नहीं निकाला तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं फिर से इसे 10 तक भरने दूंगा एक बारी, एंड इस पर तो मैं अब और पुल नहीं मारने वाला आई गेस। एंड मुझे जरा वो देखनी है, तो मुझे जो वेपन मिला, एक नया वेपन मिला मुझे, सो लेट मी सी ये क्या करता है। 5 स्टार वेपन है, वुल्फ्स ग्रेवस्टोन, इंक्रीजेस ATK बाय 20%, ठीक है, ये बेस ATK के लिए है। On hit attacks against opponents with his all party members ATK. Okay, can only occur every. I don't know ये अच्छा है कि नहीं है, बट फिर भी ठीक ही है। 5 स्टार वेपन है एटलीस्ट। एज अ क्लेमोर मेरे पास एक 5 स्टार वेपन आ चुका है फाइनली। सो लेट मी जस्ट गो नाउ। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये वाली क्वेस्ट करता हूँ। तो इसकी इवेंट डिटेल्स देखो, सो इसका तो अभी अनलॉक नहीं है, बट ये वाली देखी जाए तो इसका अभी नेक्स्ट पार्ट अनलॉक हो गया। तो ठीक है, गो टू चैलेंज करते हैं, आ जाइए। Suspicion confirmed. While patrolling the area, I was sure I'd sensed a familiar... If Miss Charlotte were to see you like this, I'm guessing sword... You'd make the front pages of every major newspaper. And there'd be crowds of Fontanian... That look on your face... Calm... Fire water, caramel, cocoa. Cut the ingredients into small pieces. Shake properly. Master goblet large. Master goblet large. Your caramel blaze is ready. Huh. It sure lives up to its name. The color reminds me of a raging fire. While that I'm all right. I just need a little time to get used to it. As I recall,
The last time I drank alcohol was at a wine tasting event that Navia invited me to last year from a but when Miss Farina's, in fact, she even, out of the utmost respect for her skill, I truly... Huh? Once I returned to Fontaine, I'm not on my way to Mondstadt, we happened to take this. I've often heard Sigewinne praise her work. She's gentle and oh, thank best to just... Since I eat a lot of meat, after the sword I had 8. Of course, there was still room. I've certainly tried all the red meat dishes. I think I've... to be honest, I can still take... I've seen a little. Navia's done some rather extensive research on this place. Many of the scenes and However, perhaps because recently, while this has slightly reduced their perhaps it's because that over time, the faint phrase. Of course, there is a solution to the next time, if you all... Indeed it is. The knight's codenamed. They told me the design has only just been final. But I'm certain after handling my affairs, they headed to the tavern for a gathering. Drinking barrels of beer the night. So what you're saying is, while Are you already based on my... So when the time comes, All right. I'll make sure I'm mental. Even if it's still a bit strong, I'll do my best to finish it. Okay, fruit wine. ठीक है, fruit wine करा, caramel करा, and full folks करा. ठीक है, full folks की कर दी. चलो, next. Cut the piece ingredients into pieces of any size. Small bits. चलो. Let's go. Shake properly. Couple goblets more. Star salt. ठीक है, आ जाओ. So let's go up. Perfect one. Hello, I'm Godson. Welcome to my live stream. Thank you so much, buddy. All right, this new creation is called Leisure Time, a cocktail made exclusively for champion duelists. Enjoy. Have you अभी के added लिए तो fruit फिलहाल wine? के लिए ये वाला क्वेस्ट It कर रहे हैं, tastes थोड़ा सा wonderful. monster वाला. This is ideal for me. There's a Like subtle ये mini saltiness that combines mini well quest with the type होती हैं. tartness of the fruit Mini games कह and the सकते हो sweetness इनको. of the caramel. Just for थोड़े से a Each little bit sip kind of balances chromosomes. delicately on the edge of perfection.
एंड बाय द वे मैंने अभी अभी जस्ट स्टैंडर्ड बैनर पे 10 का पुल मारा है एंड उसमें से मुझे 2 चीजें मिली। यस, इवेंट्स कर रहा हूँ मैं। एंड जस्ट मैंने अभी अभी स्टैंडर्ड बैनर पे 10 का पुल मारा एंड आई गॉट I see. अपना Its unique aroma and taste will वो hold a वाला special करेक्टर, place in my उसका memories नाम of मैं अभी भूल Mondstadt. गया। एक्चुअली नेटलैंड का वो Do कैरेक्टर है you उड़ने think, वाला। if गेम the chance साउंड्स were to कर present ले itself, ज्यादा। you'd be interested in mixing ओके, drinks somewhere else? A cafe, for instance, or the हमारा Hotel de साउंड कम Boer. आ रहा है। ओके, गॉट इट। मैं इसे कर लेता हूँ कम। ओके, सो लेट्स गो। अब मेरे ख्याल से बेटर आएगा। Mostly for Navia. I understand. Thanks to you. ओके, सो वेल वेल वेल, यहाँ पर हमारा ये भी हो चुका है। वर्क का पुल किया। नो ब्रो, आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू पुल फॉर वर्क का, आई गेस, बिकॉज एक्चुअली आई वांटेड बेनेट बट मैंने 40 पुल्स मारे बट मुझे बेनेट नहीं मिला। एंड एक्चुअली आई वांट मोविका, सो आई थिंक सो मैं मोविका के लिए सेव करूंगा rather than कि मैं वर्का के लिए पुल करूं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई नीड वर्का। अगर मुझे निकालना भी हो तो मैं फ्लिंट्स निकालना चाहूंगा एज पर माई लाइक, मतलब मैं इसे, मुझे फ्लिंट्स ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में। एंड अगर मुझे वर्का और फ्लिंट्स में से कोई चूज करना हो ना तो मैं डेफिनेटली मैं फ्लिंट्स को चूज करूंगा, एज मेरा आईनो भी C6 कर रखा है मैंने। एंड अभी मैंने एक पुल किया जो 10 का, सो उसमें से मैं कौन था कैरेक्टर इसमें, इस बारी आई गेस निंगजुआंग और शिंगचू थे। निंगजुआंग और शिंगचू हैं शॉप में, बट आई गेस मई में बेनेट आ सकता है, सो मई में मैं उसमें से बेनेट निकालने का ट्राई करूंगा। एंड जस्ट अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मुझे इसका C1 मिल चुका है एक्चुअली। हमारा एक ईफा कैरेक्टर है, सो इसका मेरा अभी कॉन्स्टलेशन लॉक हुआ है। मैंने स्टैंडर्ड बैनर पे 10 का पुल मारा था, सो उसमें से मुझे ये मिला हमारा ये वाला कैरेक्टर। एंड इसी के साथ मुझे एक फर्स्ट आई गेस अपना 5 स्टार वेपन भी मिला है, वुल्फ्स ग्रेवस्टोन। सो आई डोंट नो ये अच्छा है कि नहीं, बट देखने में तो बेटर लग रहा है एक्चुअली। वुल्फ्स ग्रेवस्टोन देखने में तो मस्त लग रहा है। एंड आई गेस ये मेरा 5 स्टार वेपन है यहाँ पे इस गेम का फर्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेट्स गो, ये सही है, अच्छा है अटैक स्केलिंग कैरेक्टर्स के लिए। ओके, यू मीन कैरेक्टर्स लाइक दिया और डायलॉग वगैरह समथिंग, है ना? दिया या फिर डायलॉग वगैरह के लिए मेरे ख्याल से सही रहेगा, बिकॉज ये आई गेस क्लेमोर ही है, देखने में तो क्लेमोर ही लग रहा है। एंड बाय द वे मेरे ड्यूरन अब कैसा हो चुका है, लेट मी सी। ओके, मैं ड्यूरन को भी लेवल अप कर सकता हूँ, वैसे हम ड्यूरन को लेवल अप नहीं किया। ठीक है, ड्यूरन को भी इन फ्यूचर लेवल अप करेंगे। कैन यूज इट, यू डोंट गेट अ साइन। यस ब्रो, आई थिंक सो आई विल नॉट गोना गेट हर साइन वेपन, सिग्नेचर वेपन मैं उसका नहीं निकाल पाऊंगा, बिकॉज आई थिंक सो मैं ट्राई करूंगा कि मोविका और सिटलाली हम निकाल लें, बिकॉज मोविका सिटलाली के साथ ही वर्क करेगी। सो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मोविका और कुछ भी करके सिटलाली मेरी टीम में आ जाए। बाय द वे अभी के लिए तो मेरी जैसे टीम है, अभी के लिए मेरी ये टीम चल रही है, जिबाई टीम, और ये बैटल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। So let's go. By the way, don't forget to like, share and subscribe my channel, bro, because we are so close to 600 subscribers. So let's see कब हम उसे भी हिंट करते हैं। एंड मैं यहाँ पर से वो भी निकाल लेता हूँ, हमारे प्राइमोस यहाँ पे मिल रहे होंगे ना। इवेंट डिटेल्स, लेट्स गो, आई एम गोना गेट दिस, लेट्स गो, नाइस एंड बड़ी। यहाँ पर हमें ये भी मिल चुका है,
तो इसके काफी सारे पार्ट्स हैं वैसे। कितना दिन हो गया खेलते हुए जेंशिन? अच्छे खासे हो गए भाई, आई गेस मंथ्स तो हो ही गए, 2 और 3 मंथ्स तो अच्छे खासे आराम से हो गए मेरे पास। कितने बजे तक लाइव है? बस थोड़ी देर तक है, इसके बाद मैं एंड करने वाला हूँ लाइव स्ट्रीम। ओके, इसमें क्या मुझे मिल रहा है? लेट मी सी। ओके, ये मिल गया। on you're low on promos, you should explore Natlan and not cry first. Yes bro, actually मैंने not cry काफी ज्यादा वो कर रखा है। ओके, ओमन गिफ्ट, स्टार ओमन, ये कुछ तो मिला मुझे। ठीक है, मैंने नॉट क्राई तो अच्छा खासा एक्सप्लोर कर रखा है एंड मैं उसको भी कर रहा हूँ। इट्स अ वेपन। ओके, ये मुझे कोई वेपन मिला है। लेट मी सी, ये किस टाइप का वेपन है? नहीं, ये वेपन नहीं है भाई, कुछ अलग ही चीज मिली मुझे अभी। वेपन होता तो वो दिखता अभी। ये है क्या? आई ऑफ परसेप्शन? नहीं, ये नहीं हो सकता। आई डोंट नो, जो भी होगा बट अच्छी चीज होगी आई गेस मिली। कैटलिस्ट वेपन स्किन। ओके, कैटलिस्ट वेपन स्किन। ओके, गॉट इट हाई। सो लेट्स गो। बाद में अपनी सिटली के साथ फाइट करने का अलग ही मजा आता है यार। मतलब सिटलाडी नहीं, ये अपनी जिपाई, जिपाई के साथ फाइट करने का अलग मजा आता है भाई। सो लेट्स गो। वैसे मैं अपना एक यहाँ पर ना एक यूज करना चाहूंगा जस्ट फॉर, मैं एक बारी इससे भी फाइट करके आता हूँ बिकॉज इससे आई गेस फाइट करूंगा। लेट मी ट्राई टू फाइट विद हिम। इससे ट्राई करते हैं फाइटिंग आज। मैं इससे आज तक कभी नहीं लड़ा हूँ, ये वाले बॉस के साथ। कोलंबिना की प्रोफाइल ओपन करो और उसका वेपन के राइट साइड नीचे देखो, स्किन चेंज का ऑप्शन मिलेगा। ओके, कोलंबिना, लेट मी सी। कोलंबिना के वेपन में जाके कोलंबिना का प्रोफाइल ओपन करो एंड प्रोफाइल ओपन करके उसका वेपन के राइट साइड, वेपन के राइट साइड में, वेपन के राइट साइड में कहाँ पर आ रहा है भाई? आई डोंट थिंक सो इसके यहाँ पर कहीं पे भी आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। वेट अ सेकंड। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? वेट अ सेकंड, हाँ ये रहा। ओके, सो ये चीज़ है, ये मैंने स्विच किया। सो अब मेरे ख्याल से ये इस वे में वर्क करेगा। यस, एक्चुअली अब मस्त लग रहा है ये। इट्स लुकिंग काइंड ऑफ कूल नाउ। अब ये कूल दिख रहा है एक्चुअली। लेट्स मी सी, ये वाला बॉस कहाँ पर है? इस वाले बॉस से एक बारी फाइट करके आता हूँ। लेट्स गो। एक बार इस वाले बॉस से भी ना मैं फाइट करके देखना चाहता हूँ। सो लेट्स गो। ये किया एंड इसके साथ ये भी किया। ये वाले बॉस के साथ कैसा फाइट जाता है देखते हैं। Go get him, Aiden! The sky's clear, the glazed moon shines! Arrogant and presumptuous! लेट्स गो। जब से जिपाई आई है ना टीम में, एक्चुअली काफी ज्यादा इजी हो गया यार फाइटिंग इजी हो गया तब से। लाइक सीरियसली डूड, जब से जिपाई आई है टीम में, इट्स एक्चुअली गॉट काफी ज्यादा इजी हो गया मेरे लिए गेम तब से। बाद में मैंने अभी इसको अटैक मोड में नहीं रखना चाहिए था, मेरी जिबाई का डैमेज कम हो गया उसकी वजह से। फ्यूरिनो को मुझे हील मोड पे रख के इससे फाइट करना चाहिए, तो इसका डैमेज आउटकम ज़्यादा आएगा आई गेस एज कम्पेयर टू
द ओल्ड वर्जन। ओके आ जाओ भाई, अब करेंगे तेरे से फाइट अच्छे से। इसको पीटना होता है। लेट्स गो। यहाँ पर ये दिया एंड लेट्स गो, ये ले एंड आ जाओ भैया। आर्टिफैक्ट्स क्या है, लेट मी शो यू भाई। ओके अब आया ना डैमेज, अब इसको डैमेज बताओ। लेट्स गो। अब मेरा डैमेज देखो भाई ऊपर। लेट्स गो, दैट वाज अ ओपी डैमेज। ओके सो लेट मी जस्ट शो यू इसके आर्टिफैक्ट्स। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसके आर्टिफैक्ट्स इतने खास नहीं है मेरे पास, मैंने इतने खास आर्टिफैक्ट्स ग्राइंड नहीं किए हैं, बट मेरे पास इसका फ्लावर अच्छा है। लाइक फ्लावर में एचपी बेस्ड है और क्रिट रेट मुझे 9.7 का मिल रहा है और क्रिट डैमेज 19.4 का। और इसका गॉबलेट भी मेरे पास अच्छा है जो कि डिफेंस बेस्ड है एंड क्रिट रेट मुझे 10.1% का मिल रहा है और क्रिट डैमेज 5.4% का। सो ये सब मुझे मिल रहा है अभी। बाकी वाले इतने खास नहीं है, सो मैंने उन्हें अभी अपग्रेड भी नहीं कर रखा है। ये 80 वेस्ट है और ये भी, ये नॉर्मल है बाकी। एक ये वाला अच्छा है जिससे मुझे क्रिट डैमेज मिल जाता है, सो इसको मैंने कर रखा है अपग्रेड। ये हैं इसके मेन अभी आर्टिफैक्ट्स जो मैंने अभी इस पे लगा रखे। एंड बाय द वे अगर इसके वेपन की बात की जाए तो मैंने हार्बिंजर ऑफ डॉन दे रखा है पूरा रिफाइनमेंट रैंक 5 के साथ, जो कि क्रिट डैमेज पर मेन फोकस करता है। जब इसकी एचपी पूरी फुल होती है तो 46.9% हो जाता है। एंड इसका ओवरऑल बिल्ड अगर दिखाऊं तो कुछ यूं है अभी इसका ओवरऑल बिल्ड फिलहाल के लिए। तो दिस इज अ बिल्ड फॉर नाउ। थोड़ा और फार्म कर लो, 100 to 300 के डैमेज मिलेगा। ओके सो करूंगा मैं फार्म, हम फार्म भी करते रहेंगे। बाय द वे कैन यू टेल मी, मतलब रोज़ारिया के लिए अभी के लिए मेरे पास आर्टिफैक्ट्स कैसे हैं? मतलब इसके लिए तो मैंने फार्म भी नहीं किए हैं, बट इसके लिए मैं नॉबलेस ही रखूंगा बिकॉज जिबाई के लिए अगर मुझे एक उसका डोमेन करना है जिबाई का, स्पेसिफिक जिबाई का डोमेन, सो उसके लिए मुझे वो एक बढ़िया क्रायो यूनिट चाहिए। तो इसके लिए कैसे है मेरे पास। हेलो लैगर भाई, वेलकम बैक टू माय लाइव स्ट्रीम। पे स्केल करती है वो, यस भाई सही कहा। सो इसके कैसे हैं मेरे पास, ज़रा इससे बताइए कि ये इसके ये आर्टिफैक्ट्स कैसे हैं। लाइक ऐसे जस्ट सपोर्ट के लिए ही इसे मैं यूज़ करूँगा उस फाइट में। सो इसके क्या अच्छे हैं, लाइक इनको अपग्रेड करना चाहिए। ये सब है अभी मेरे पास, नोब्लेस और एम्बलम। यस मैं इसको नोब्लेस ही देने वाला हूँ। सो बस जस्ट मुझे बस ये बताओ कि इसका नोब्लेस ये अपग्रेड करने लायक है कि नहीं, क्या लगता है। अटैक स्केलिंग है, सपोर्ट बिल्ड। हैप्पी होली ब्रो, हैप्पी होली लैगर भाई, आपको भी हैप्पी होली एंड आपको भी हैप्पी होली भाई। आई एम गॉडसन। सपोर्ट बिल्ड के लिए सही है। ओके सपोर्ट बिल्ड के लिए सही है, मतलब ये जो जिबाई का है ना, इसके टैलेंट्स बिल्ड के लिए ये लगता है भाई। ये क्वीन वाला सेट, और इससे फाइट करने के लिए ना एक अच्छा क्रायो यूनिट चाहिए होता है। अगर फेवरनेस अच्छा रहे हो उनके लिए तो क्रिट रेट थोड़ा बढ़ा लेना। ओके ठीक है। इसमें मैं उसको मैंने वेपन वो ही दे रखा है भाई। लेट मी शो यू इसका वेपन क्या है। ये है इसका वेपन। इसका वेपन अभी मैंने वाइट टेसल रखा हुआ है फिलहाल। एंड अगर मैं देखूं तो इसका फेबोनियस में ले सकता हूँ जो कि एनर्जी रिचार्ज कर देगा, लाइक डिसेंट वे में ये एनर्जी रिचार्ज कर देगा। अभी के लिए तो मैंने फिलहाल इस पर पता नहीं कौन सा ये वाला लगा रखा है, वाइट टेसल, जो कि क्रिट रेट अभी बढ़ा रहा है इसका।
क्या लगता है इसमें फेवोनियस लगाना चाहिए मुझे इस पे? ओके ठीक है, अगर इसे फेवोनियस लगाना चाहिए तो मैं फेवोनियस भी लगा सकता हूँ, या फिर ये प्रोटोटाइप स्टार ग्लिटर भी लगा सकते हैं, जस्ट फॉर एनर्जी रिचार्ज, थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज अच्छा हो जाएगा। स्पेशल स्ट्रीम, ओके लेट्स सी, अगर करनी होगी तो हम कर लेंगे वो भी। को फॉर्म करना है क्या? वीकली बॉस, ओके कर सकते हैं वैसे। है तो उसको सिर्फ नोबलेस सेट ये दे दो, और फिर फर्नेस लेंस दे दो। ओके फर्नेस लेंस ठीक है, सो मैं इसे दे देता हूँ ये वाला। बाय द वे इसे एनहांस कर सकता हूँ, लेट मी सी। ओके इसे एनहांस नहीं कर सकते हैं एक्चुअली में हम, एक्सचेंज इन द गिफ्ट शॉप। सो मैं इसे वो नहीं कर सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, हम इसे फिर भी ये दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसे स्विच कर रहा हूँ। सो लेट्स गो, इसे मैं यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ, ये तो स्पोर्ट कैरेक्टर। यस भाई, सो इसे सपोर्टिव वे में कर देता हूँ और आर्टिफैक्ट्स को थोड़ा सा लेवल अप कर देते हैं। यस ये को ऑप कर लिए, वही इजी होगा अभी। यस भाई, वीकली बॉस वही कर लेंगे हम। सो कर लेते हैं, आ जाइए वीकली बॉस मार लेते हैं यहाँ पे। या फिर वेट अ सेकंड, मैं इसे ना ट्राई करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसे ये वाला लेवल 10 दे दिया है एक्चुअली, और इसे भी एनहेंस करने का ट्राई करते हैं। तो इससे एनहेंस करके क्या बढ़ता है, लेट्स सी। इससे 80 के ही बढ़ रहा है एक्चुअली। नहीं, इसको अपग्रेड करने से कुछ नहीं मिलेगा आई गेस खास। इसे एनहेंस करने का ट्राई करता हूँ, इसे एनहेंस करके इसकी एचपी पर हो रहा है स्केल, इसको एनर्जी रिचार्ज आई गेस बढ़ रहा है। लेट मी सी, ये करके मेरे ख्याल से सही होगा। के लिए बिल्ड कर रहे हैं अभी के लिए तो मैं जिबाई को करने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी के लिए तो मैं जिबाई को करने का ट्राई कर रहा हूँ ब्रो। 6-15 मिनट दो, मैंने कैश ही डिलीट कर लिया गेम का, अभी कंपाइलिंग शेडर्स वाला स्क्रीन पर अटका हूँ 1 घंटे से। कोई बात नहीं भाई, आप आराम से करिए। बाद में मैं थोड़ा सा इसे अच्छा बनाने का ट्राई करता हूँ तब तक के लिए। सो हम इसे एनहेंसमेंट देते हैं थोड़ा, लेट्स गो। सो इससे इसका आई गेस ठीक बन जाएगा ये थोड़ा। तो एक क्रायो को क्यों बिल्ड कर रहे हो? लेवल 16 तक आर्टिक लो, बस ठीक है, लेवल 16 तक करना चाहिए। ठीक है जस्ट मैं इसे यूज करने के लिए वो कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने लेवल 16 तक दे दिया। ओके ओके, नहीं कर रहा नहीं कर रहा। बाय द वे मैं एक बारी अब ट्राई करने वाला हूँ उसे। पिछली बारी मैं कर नहीं पाया था, मैंने सिर्फ एक बारी उससे फाइट करके जीत पाया था। सो लेट्स सी अभी हम दोबारा से इसे जीत पाते हैं कि नहीं। लेट्स सी, इस फाइट में मैं सिर्फ एक बारी जीता था पिछली बारी। He takes a lot of XP, so for now it's better to save. Okay, so मैं सेव करने का ट्राई करूंगा और एक बारी इसमें फाइट करने का ट्राई करते हैं। आ जाइए। वैसे इसमें फाइट करने के लिए मुझे वो भी करना पड़ेगा ना, एक यूज कर देता हूँ आई गेस। इसे ना मैं एक यूज कर रहा हूँ जस्ट टू गेट दिस। पहले आर्टिफैक्ट सेट करो। ओके ठीक है, तो पहले आर्टिफैक्ट सेट करूँ क्या इसको? I hear you've got a job for me. वैसे इसका डिटेल्स अगर मैं देखूँ तो एट्रीब्यूट्स में मैं इसे असेंड दे सकता हूँ, तो इसे असेंड दे देते हैं। आ जाइए, मैंने इसे असेशन दे दिया एंड 59 लेवल दे दिया। लेट्स गो। सेट फिल्टर से मैंने वो कर लिया है एक्चुअली। इसके आर्टिफैक्ट्स अभी के लिए बेस्ट लगे हुए हैं भाई, जो इस पर बैटल ही कर सकते हैं।
कोऑप में कर ले भाई। ये कोऑप में नहीं होता है, ये वाला कोऑप में नहीं होता है, इसलिए मैं इसे अकेले ही करना पड़ेगा। ये वाला जो फाइट है ना, ये अकेले में नहीं हो पाता, आई डोंट नो व्हाई। इसलिए मैं ये जा रहा हूँ खुद करने के लिए। ये वाला कोऑप में नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों ये वियर्ड लगता है थोड़ा। ऐसे ही भाई, जस्ट मुझे ये चाहिए बिकॉज इसके लिए, ये वाली फाइट के लिए एक अच्छा क्रायो क्रायो चाहिए होगा मुझे, जो क्रायो अप्लाई करे। इसलिए मैंने क्रायो अप्लायर लाया यहाँ पे। यस भाई, कल फ्री हैं हम। You can't get me up here. You can't run. You can't run. What a nuisance. Without further ado. Judgment. Surge. Divine light, shield them. One square's time is far too slow. Running speed. Oh, yes, this is more like it. Be cleansed. Smite the dust. Foolish and ignorant. More like it. May I present? Surge. Smite the dust. King and Queen should present a united front. The show begins. Be cleansed. Arrogant and presumptuous. The sky's clear. The glazed moon shines. Smite the dust. How dare you! Surge. Foolish, ignorant. लेट्स सी, अब इसका सेकंड फेज में करवाता हूँ। भाई सेकंड फेज इज लाइक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इसका। It had to be this form? A toy really doesn't suit me. अरे स्किप हो जाओ भाई, लेट्स गो। सेकंड फेज पर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। Brilliant! A new moon rises. Be cleansed. Smite the dust.
Divine light, shield them! May I present? It is time to slay our foes with one almighty This calls for some pomp and ceremony. Good lord, I was forgetting your lines. Where were we? Oh, brilliant! Let the world collide! Stop that! Let us dance, my dearest! Try to remember the steps this time. Surge. A moonlit night for all. I thought I had it memorized. Judgment! May I present? Looks like overtime today. And now, a towering return to form! Judgment! Oh no! Sorry, my dear. The show begins! You can't run! Blundering oaf! You're ruining the show! The sky's clear, the blaze moon shines! Oh, brilliant! Let my name echo in song! Ow! Judgment! Oh, this is all getting rather dreary. Allow me, my darling. Ow! A little too toasty. A new moon rises. It is time to slay our foes with one almighty. This calls for some pomp and ceremony. Good lord, I was forgetting your lines. Where were we? Be cleansed! Light the dust! The show begins! You can't run! My power is immense! One blast is quite enough. How dare you! And now, a towering return to form! Punishment! Time to shine! Oh no! Sorry, my dear. Divine light, shield them! Light the dust! Blundering oaf! You're ruining the show! Our performance has yet to conclude. Judgment! I dance for you, my dear. Arrogant and presumptuous! Arrogant and dark clouds obscure the sky. My power is immense. One blast is quite enough. It is time to slay our foes with one Judgment! This calls for some pomp. Good lord, I was forgetting your lines. Where were we? Be cleansed! Our performance has yet to conclude. Light the dust! I dance for you, my dear.
This is all getting rather dreary. Allow me, my darling. The curtain. Let's go, finally. मैं ऐसे कर पाया भाई. Let's go. W's in the chat भाई. कर लोगे बस टाइम लगेगा. या कर लेगा. ग्राइंड है बस. ओके सो चलो भाई. ये एक्चुअली कोऑप में नहीं हो पाता. ये सिंगल ही करना पड़ता है हमेशा. फाइनली भाई मुझे ये मिल गई जो मुझे चाहिए था. हो गया. यस भाई हो गया. मजेदार था ये फाइट. कोऑप में होगा. ये कोऑप में होगा बट उसके लिए आई गेस पता नहीं कोई क्वेस्ट होता है. सोरा भाई ने बोला था कि इसके लिए कोई क्वेस्ट लगता है. वो मैंने करा नहीं है अभी. आई गेस उसके लिए कोई तो क्वेस्ट लगता है. इसका डोमेन ओपन हुआ है नहीं वर्ल्ड में कहीं. नहीं भाई इसका कोई डोमेन तो नहीं ओपन हुआ है आई गेस. अभी तक इसका कोई डोमेन ओपन नहीं हुआ है मेरा. विच इज होमवर्क. तो जरा ट्राउस डोमेन में इसका अभी एक और बारी कर सकता हूँ मैं. सो क्या लगता है एक और बारी कर लूँ. आई गेस कर लेना चाहिए है ना. बिकॉज मेरा ये जिबाई का टैलेंट अपग्रेड हो जाएगा. सो जितना इसका टैलेंट अपग्रेड कर सकता हूँ उतना अच्छा है मेरे लिए. 7 एंड ये क्राफ्टेबल मेरे पास नहीं है अभी. मिलेगा एक क्वेस्ट. इवेंट्स में देखो. ठीक है इवेंट्स में देखता हूँ मैं. लेट मी सी. ओ भाई इसके भी नए इवेंट्स हो गए अपडेट. ठीक है इवेंट्स में कौन सा मिलेगा क्वेस्ट. टेस्ट रन. नॉट ट्राई गेटवे. वंडरलैंड ट्रेजर्स. चलो बाय एंड गुड नाइट. ओके बाय बाय भाई गुड नाइट. सो लेट्स गो. इमेजिनेरियम थिएटर. यहाँ पर थिएटर वाला है एक. सो आई डोंट नो थिएटर वाले में क्या होगा. रेडियंट मॉन्टेस्को. आई डोंट नो कौन सा वाला क्वेस्ट होता है भाई इसका. बट आई गेस मुझे एक चीज पता है कि मुझे एक और बारी उनसे फाइट करने जाना पड़ेगा. बिकॉज आज का वो वाला कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आई गेस मैं स्ट्रीम एंड कर दूंगा. लेट्स गो. एक और बारी फाइट ले लेते हैं इनसे. आई नो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बट मजा भी आता है भाई. Without further ado, lofty wisdom will show us the way. This is more like it. Be cleansed. May I present? Smite the dust. Foolish and ignorant.
can't get me up here. Oh, brilliant! Arrogant! Without further ado! You can't run! Be cleansed! Light the dust! The sky's clear. The glaze moon shines. Light the dust. We should present a united front. Let the world collide! Winds converge. Be cleansed. Let's have a ball. Light the dust. Without further ado. The show begins! Surge. Divine light, shield them! Oh, this is all getting rather dreary. Allow me, my darling. May I present? A new moon rises. Ow! A little too toasty. Without further... My mistake. Light the dust. It is time to slay our foes with one almighty This calls for some might. pomp and ceremony. Good lord, always forgetting your lines. Oh, brilliant! Be cleansed. Foolish and ignorant. My power is immense. Just don't get stuck in a barrel. Light the dust. The sky's clear. The blaze moon shines. Judgment. Let us dance, my dearest. Try to remember the steps this time. Stop that! I thought I had it memorized. Surge. Moons converge. A towering return to form! Oh no! The show begins! Sorry, my dear. Without further ado. Light the Blundering oath! You're ruining the show!
Divine light, shield them! Dance, my dear. Try to remember the steps this time. You can't run! Oops! I thought it had memorized. It is time to slay our foes with one almighty. This calls for some pomp and ceremony. Good lord. The show begins. I've lost my place. Where were we? Be cleansed! Like the dust! The stage is yours, my king. I shall take the spotlight once more. Oh, brilliant! You can't run! I see how it is. Surge. Oh, this is all getting rather dreary. Allow me, my darling. Judgment! Ow! A little too toasty. You can't run! And now, a towering return to form! Judgment! The tidal chorus sings for you! My final job. Symphony of cannon fire. May I present? You can't run! Judgment! It is time to slay our foes with one almighty. This calls for some pomp and ceremony. Good lord, always forgetting your lines. Without further Our ado, performance has yet to Lofty conclude. wisdom will show us the way! Like the dust! I dance for you, my dear. Like the dust! How brilliant! Oh, this is all getting rather dreary. Allow me, my darling. मर गया भाई मर गया लेट्स गो चलो फाइनली डन अच्छा वीकली ट्रेजरी लिमिट रीच हो गई है भाई लोल हमारा लिमिट ही रीच हो गया ये फ्री फंड का ही फाइट हो गया लोल भाई वर्ल्ड में एक बंदे को बुलाओ उसका बैड उसके बाद स्टार्ट करो कोऑप को ऑप्शन यहाँ आ जाएगा नहीं भाई नहीं आता है एक्चुअली ये चीज़ नहीं आती है ये मैं पहले भी कर चुका हूँ बट ये ऑप्शन नहीं आता है सो उसी टाइम उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि एक क्वेस्ट है जो कि आपको करना पड़ेगा आई डोंट नो वो कौन सा क्वेस्ट होता है बट मैं चेकआउट ज़रूर करूँगा बट एक्चुअली मेरी रोजारिया ने कर लिया भाई काम ये काम काया नहीं कर पाया था इससे पहले मेरा काया ये काम नहीं कर पाया बट रोजारिया ये कर पाई आई थिंक सो रोजारिया इज बेटर देन काया इसलिए मैं थोड़ा रोजारिया को भी बिल्ड करने आ गया था जस्ट बिकॉज कि मुझे आई एम गोना गो डू माय डेलीज नाउ इनवाइट मी इफ यू नीड हेल्प ओके एक्चुअली अभी के लिए तो मुझे हेल्प नहीं चाहिए बिकॉज मैं अभी स्ट्रीम वैसे भी एंड ही करने वाला हूँ अभी के लिए तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ ब्रो
तो लेट्स गो। अभी के लिए आपसे हम नेक्स्ट स्ट्रीम पे मिलेंगे। बाय द वे, आप मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई एम सो क्लोज टू 600 सब्सक्राइबर्स एंड 1K सब्सक्राइबर्स का गोल जल्दी से जल्दी रीच करना है तुम्हारे भाई को। सो अ लिटिल बिट सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। सो लेट्स गो। अभी के लिए हम करते हैं यहाँ पर मस्त स्ट्रीम को एंड। भाई आज एक्चुअली रोजारिया अच्छी खेल गई। इफ यू गेट चोंगयुन। ओके, चोंगयुन कौन है? आई डोंट नो चोंगयुन कौन है, बट ठीक है, मैं देखूंगा भाई। बट बाय द वे, मेरा अभी ड्रीम कैरेक्टर है यहाँ पर मूवी का निकालना। सो मैं देखता हूँ कि मूवी का मुझे मिल पाती है कि नहीं। एंड ओके, सो लेट्स गो। बाय बाय, गुड नाइट ब्रो। ओके, सो दैट्स इट स्ट्रीम गाइस। अगर आपको स्ट्रीम पसंद आया हो तो जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और कंटेंट को देखने के लिए। सो मैं तुमसे मिलता हूँ आने वाली नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे टू ईच एंड एवरी वन।